Assalamualaikum, my dear students of class 5. How are you all? I hope you all are doing well at your homes. Students, myself Fatma Zaid and I'm here with another video lecture of social studies. It's a lecture number 11 and today is 25th May 2021 and it's Tuesday. Students, as you know that in the previous couple of lectures we have started our lesson number 4 which is means of communication. I hope आप सबको क्लियर हो गया होगा कि what is communication, what are the means of communication. Basically, communication is the exchange of information, ideas or feelings, etc. And the means of communication are the ways through which we are communicating with other fellows, teachers, or anyone else. Okay, these can be telephone, mobile phone, television, radio, newspapers, letters, etc. Any other thing by which we are communicating with another person is known as the means of communication. Okay, students, well, before starting today's lecture, let me discuss something with you. As you know that in the previous lecture, I have assigned you a task that you have to share. Your voice message in the groups in which you will share the most commonly used social media app and its advantages. I am really most amazed to hear your presentations. You all of you have done your best. All of you have spark in your voices. Actually, the purpose of assigning this task was to provide you a platform in which you can share your voice, in which you can share your ideas behind using that app and the advantages which you feel. Okay, all of you have done your best. It seems that all of you are much encouraged and motivated towards learning. Very well done, students. Keep it up. Okay. Now comes towards today's lecture. In this lecture, we are going to study the last topic of this lesson, which is advantages and disadvantages of media. We all know that everything has some advantages and some disadvantages. सब मीडिया के क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है आप में से बहुत से लोग जानते होंगे. Mass media and social media have both advantages and disadvantages. Okay, now let's discuss what are the advantages and disadvantages of media. Okay, मीडिया के अंदर दोनों मैस मीडिया भी आ जाता है और सोशल मीडिया. हम अगर ओवरऑल मीडिया की बात करें तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं वो हम आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे. ओके, फर्स्ट अगर हम एडवांटेज की बात करें, इट इज़ ईजी एंड इमीडिएट एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन. इमीडिएट मीन्स फौरी, कि हम किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होती तो हम फौरी से एक्सेस कर लेते हैं, मतलब फौरी से हमें मिल जाती है इन्फॉर्मेशन मीडिया के थ्रू. जस्ट लाइक हम गूगल के थ्रू, जस्ट लाइक हमें किसी वर्ड का मीनिंग नहीं पता था, हम क्या करते हैं फौरी से गूगल कर लेते हैं. तो क्या होता है हमें फौरी से इमीडिएटली उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है. सो फर्स्ट एडवांटेज क्या हुआ, इट इज़ एन ईजी एंड इमीडिएट एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन. और डिसएडवांटेज, हर्डल इन द वे टू एक्सेस ट्रू एंड यूजफुल इन्फॉर्मेशन. हर्डल मीन्स रुकावट. अब आपने देखा होगा सोशल मीडिया की अगर हम बात करें, रिलेट करें उससे, क्या होता है कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, इतने ज़्यादा मतलब पोस्ट आ रही होती है तो हमें नहीं पता चलता कि कौन सी बात सही है कौन सी गलत है. मोस्टली ऐसा होता है कुछ फेक न्यूज़ भी सर्कुलेट कर रही थी मीडिया पे या अक्सर यूट्यूब पे. तो क्या होता हमारे लिए एक रुकावट आ जाती कि सही इन्फॉर्मेशन कौन सी है कौन सी इन्फॉर्मेशन गलत है. सो ये हो गया एक मीडिया का डिसएडवांटेज. इफ़ वी टॉक अबाउट सेकेंड एडवांटेज ऑफ मीडिया, इट इज़ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट. तो एक एंटरटेनमेंट का ज़रिया है. हम जब चाहें मूवीज़ देख सकते हैं, फिल्म्स, मूवीज़, गेम्स खेल सकते हैं ऑनलाइन. तो एक एंटरटेनमेंट का ज़रिए जब हम बोर हो रहे हो हम मीडिया को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं. डिसएडवांटेज की बात करें सो इट इज़ वेस्टेज ऑफ टाइम. येस, हम बहुत सा टाइम अपना सोशल मीडिया पे, मोबाइल फ़ोन्स पे, यूट्यूब पे वीडियोज़ देख के वेस्ट करते हैं. तो ये क्या हुआ, इट्स डिसएडवांटेज, वेस्टेज ऑफ टाइम. जस्ट लाइक अगर आप लोग स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऑनलाइन लेक्चर के बहाने आप लोग फ़ोन तो पकड़ लेते हैं. लेक्चर आपको 10 to 20 मिनट्स, आप एक घंटा मोबाइल उसको यूज़ कर रहे हैं. सो क्या, यू आर वेस्टिंग योर टाइम. इट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ मीडिया. थर्ड एडवांटेज इज़ गेटिंग न्यू एंड इनोवेटिव आइडियाज़. इनोवेटिव मीन्स जदीद, नए आइडियाज़
फॉर सपोज हमें किसी प्रेजेंटेशन बनाने के बारे में कहा जाता है कि आपने प्रेजेंटेशन देनी है, बट यू हैव डोंट हैव एनी आइडिया हाउ यू हैव टू प्रेजेंट। सो आप क्या करते हैं, गूगल से आइडियाज़ ले सकते हैं, यूट्यूब से आइडियाज़ ले सकते हैं। सो इट इज़ एन एडवांटेज ऑफ मीडिया दैट यू कैन गेट न्यू एंड इनोवेटिव आइडियाज़। Clear? Okay. On the other hand, if we talk about its disadvantage, poor health due to excessive exposure to media. Excessive means बहुत ज़्यादा यूज़, अगर हम मतलब मोबाइल फ़ोन से एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो पुअर हेल्थ, ये हमारी हेल्थ पे इफेक्ट रहता है। लाइक हमारे आई साइड वीक हो सकते हैं, हमारे हेडेक हो सकता है इससे। और आपने देखा होगा पोस्चर, हमारा सिटिंग पोस्चर, हमारी हम लोग मतलब एक प्रॉपर नहीं बैठ रहे होते हम लोग, हमारे बैकबोन में दर्द हो सकती है। इस तरह डिफरेंट हेल्थ पे इफेक्ट्स हो सकते हैं मीडिया के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से। इफ़ यू टॉक अबाउट फोर्थ एडवांटेज ऑफ मीडिया, इट इज़ सोर्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। क्या है नॉलेज? एक्वायर मीन्स हासिल करना, नॉलेज हासिल करने का एक ज़रिया है, सोर्स है। मतलब किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन या नॉलेज नहीं होती तो हम मीडिया के थ्रू नॉलेज हासिल कर लेते हैं। और डिसएडवांटेज की बात करें, ओवरफ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हिंडर्स टू रीच एनी कंक्लूजन। हिंडर्स मीन रुकावट बन जाता है। समटाइम किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो जाती है तो हमें नहीं पता, कुछ इन्फॉर्मेशन फेक न्यूज़ भी होती है, कुछ सही होती है, तो एक रुकावट से बन जाती है कि हम कंक्लूजन पे नहीं पहुंच जाते क्या है बात सही है या गलत है। सो ये किसका डिसएडवांटेज है। स्टूडेंट्स कैन मेक गुड यूज़ ऑफ मीडिया टू लर्न, जो कि आप लोग आजकल यूज़ कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स, मीडिया को अपने लर्निंग के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स मीडिया के इस तरह से अच्छा यूज़ कर सकते हैं कि उसको अपने लर्निंग के तौर पे यूज़ करें, मतलब उसको एक लर्निंग का सोर्स बनाएं। जैसे अगर हम कहें इट्स अ मीन ऑफ लर्निंग, यानी कि एक लर्निंग का ज़रिए। हम यूट्यूब से आप अपने चैनल्स को सब्सक्राइब करके अपने लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू अपने लेक्चर्स, डेली डायरी वगैरह अटेंड कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा ज़रिया है। Students may neglect their studies if they are only interested in the media and explain the internet or the online games. अब इसका डिसएडवांटेज ये है कि स्टूडेंट्स अपनी स्टडीज़ को नेगलेक्ट कर सकते हैं। किस तरह से कि वो सिर्फ मीडिया यानी कि ऑनलाइन गेम्स में इंटरेस्टेड हों या इंटरनेट में। सो इस तरह से ये एक डिसएडवांटेज है कि स्टूडेंट्स अपनी स्टडीज़ को नेगलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, ये तो देखिए कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज मीडिया के। देयर आर मैनी अदर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मीडिया के। Well, students, your diary is now another task for you is you have to discuss the advantages and disadvantages of media with your friends and teachers in the form of voice message in your class group. I hope you will enjoy doing this activity. All of you have to participate. Okay. Well, students, that's all about today's lecture. See you in the next class. Till then, take care. Allah Hafiz.